हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम टू द डिजी टेक एजुकेशन। यार काफी समय बाद हम लाइव आ रहे होंगे इन अ रिकॉर्डेड फॉर्मेट। एंड इससे पहले यार हमारे लाइव सेशंस हुए थे काफी ज्यादा, है ना? तो आप लोगों ने यार कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उसका भी आंसर देंगे। एंड आगे का सेशन का कैसा क्या है क्या नहीं है वो भी हम आपको यार रिवील करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यार हम शेयर करने वाले हैं वाइट बोर्ड। तो सभी लोग बताइएगा वाइट बोर्ड दिख रहा है कि नहीं, थोड़ी देर से आप लोगों को सभी को शेयर होगा। एंड इट इज अ जूम सेशन, इट इज नॉट अ लाइव क्लास ऑन यूट्यूब। We'll publish this session as a direct recording. Okay. Okay. Now let's start. Let's start. Okay. So what exactly what we are discussing here? Let's first see the title. Class announcement. This is ठीक है। अब ये जो क्लास अनाउंसमेंट होने वाला है यार, दो सेपरेट पैटर्न्स में होने वाला है। दो सेपरेट पैटर्न्स में होने वाला है ये क्लास अनाउंसमेंट। So one separate pattern will be, and then there will be a next separate pattern. Okay, let's see what will be the first separate pattern. So the one separate pattern will be practical class, and next there will be theory class. Okay, जो हमारा यार थ्योरी क्लास होगा, थ्योरी क्लास हमारा सिर्फ और सिर्फ पार्ट 03 के लिए होगा। किसके लिए होगा थ्योरी क्लास? सिर्फ और सिर्फ पार्ट 03 के लिए। एंड इसमें कितने लेक्चर्स आएंगे वो हम आपको यार जल्दी ही बता रहे होंगे। थोड़ा सा वेट करो, सेशन के एंड में यार आपको ये चीज बताई जाएगी। ठीक है। ओके, चलिए आप सभी के साथ शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है। ओके, चलिए। आई थिंक सभी को दिख रहा होगा। ओके, I'll present it again if you missed it. ओके, चलिए अबे प्रैक्टिकल सेशन की बात करते हैं। तो जो प्रैक्टिकल है यार, इसमें आपको दो क्लासेस मिलेंगी। फर्स्ट इज टेक्स्ट टू एजेंट, और टेक्स्ट एनालिसिस एजेंट। और सेकंड जो हम एजेंट बनाने वाला है यहाँ पे, वो है आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंट। ठीक है। सो
Let's present. So this is a class announcement. यहाँ पे क्लास अनाउंसमेंट या देखो दो तरीके के हैं हमारे पास में. So the first type is the practical class. Second is the theory class. Theory class आपका सिर्फ पार्ट 3 लेफ्ट है. पार्ट 1 एंड 2 वी ऑलरेडी कवर्ड. उसको भी जल्दी रिवाइज कराएंगे, डोंट वरी. देन एंड ओनली इफ रिक्वेस्ट्स कम. प्रैक्टिकल क्लास में यार आपके पास में दो प्रोजेक्ट होने वाले हैं. दैट विल बी फर्स्ट इज टेक्स्ट एनालिसिस एजेंट. टेक्स्ट को एनालाइज करने वाला एजेंट. और इसके बाद आपको जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा. टेक्स्ट एनालिसिस एजेंट में यार सोर्सेस आप प्रोवाइड करोगे कहाँ से इसको टेक्स्ट एनालाइज करना है. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंट के पास जो है खुद का थिंकिंग कैपेबिलिटी होगा, तो सॉफ्टवेयर आपको बना के देगा. जस्ट आप रिक्वायरमेंट्स बता दो. ठीक है. दैट विल बी द होल गेम. ओके. तो इस फ्लो चार्ट को आप यार सेव करके रख लें. मैं आपको लिंक जरूर प्रोवाइड करूंगा. ऐसा कुछ भी नहीं है मैं आपको लिंक प्रोवाइड नहीं करने वाला. लेकिन क्या है, हाँ, आप भी सेव करके रख लें. एंड इसका इफ पॉसिबल आई टेक द स्क्रीनशॉट और द डायरेक्ट लिंक एंड आई प्रोवाइड इट एट द एंड. ओके. चलिए. आई ओके, जस्ट a minute. It might be visible. Visible है. Okay. I'll take a screenshot for once. I'll provide it at the end. Windows Shift and S. Okay, the screenshot method won't work here. Okay, yeah, it's working. I'll take whole screenshot. Okay, it's done. It's done. It's done. I'll check for once. Just a minute. What I'll do is this I've actually saved. I'll provide you guys the link. Okay. So now what I'll do is I'll go to another page or this page only, and I'll provide you the number of lectures after discussing the screenshot. Okay, let's start. Okay, we're going to share not the whole screen. You tap. I hope this tab is visible to everyone. Okay, but there is some of this error. Okay. Okay. We'll go towards the plans at Microsoft Learn. I hope it's visible to everyone. We'll scroll down. You can see that this is completed, and towards this, it's not even loaded that it's completed. We'll try to reload it again and let's see if the completion counts. Okay, the completion is not counting because we have this assessment pending.
Let's try this assessment for the part two. If this time it works, it's verifying my browser. Now the verification is completed. See, that's the problem I'm facing here. Okay, that's resuming finally. Let's see if I'm able to give that assessment. Yeah, because what Microsoft asked me to create a new ticket on this because they're unable to solve it on the previous ticket. Now that ticket that's closed. So let's try once. So this might take several minutes, but it's loading. So definitely we'll give it a shot. We can give it a try and see if it loads. We can end up this assessment. And meanwhile, it's loading. I'll provide you guys with the next learning path and its plan. If we talk about this, see, first module is a 1 hour 3 minutes. Okay, that means one lecture for this. Okay, then next, if we scroll down, 1 hour 6 minutes, that means one lecture, 46 minutes, and a 54 minutes. Again, one lecture for these. Oh, again, one lecture for this, and one lecture for this, and one for this, then one for this. Approximately, we'll be having here total 8 lectures. Okay, 8 lectures. Okay, and then these 2 lectures, and that's will be the wrap. Okay, the total 10 lectures will be having more, and that will be the wrap of AI 109 course. And total it counts to how many lectures? Total it counts to 39 lecture and one that will be the closing session of this course. Like one was the starting beginning session, one will be the closing session. Okay. So total there will be how many lectures? Not 40 currently because it's 38, 48 and 50 lectures, total 50. Okay. This course will include. Okay. Now see, this is the problem. Retry, instruction, 1 hour 58 minute remaining. Okay. So what I'll do here is okay, now what the problem is, this is the problem with Windows 11. Whenever I enter Windows Shift and S, somewhat what is appearing, the Windows start menu is appearing. It's not even allowing me to take a screenshot. This is a beautiful Windows of Microsoft. See, now it has finally appeared. Now it's
what a slow working of Windows 11 is there. I appreciate that Microsoft is nowadays being was known for its software. Now what to say? There is the error screenshot I've taken, and I'm going to attach it. So this is that screenshot. Okay. So let's end the session for now, and we'll catch up soon in next lecture. I told you total that will be um 50 lectures, and apart from those 50 lectures, you can see how many lectures we have till now. Let's see. Go to the YouTube. Let's go to my channel, Digital Education, playlist. We scroll about this playlist and see 38 videos, 60 views. Okay. So kindly continue viewing, and new lectures will be out very soon, even before you know it. Okay. Thank you guys. Thank you everyone. At the end, just like this video, share it to friends, and do subscribe to my channel, Digital Education. Thanks for watching.